Hi everyone, this is Tanishka from Wellcure and I welcome you all in today's live program on Head to Toe Healing with Acupressure by Kanishka Sengal. Okay, so before we start, I would really like to introduce Wellcure very briefly. So Wellcure is an online platform for all your holistic and your health needs. I am very proud to announce it that we are now a community of more than 4.5 lakh people. We have helped 20,000 people in reversing their lifestyle as well as their health issues. We have 150 plus health programs, and we are also associated with 20 plus health experts. We at Wellcare provide holistic health education, medical and nutritional consultations, health retreats like Niramya and Swasthya, which are based on your overall well being. Basically, Wellcure is all about lifestyle healing and food. You can also check out our app www.wellcure.com on both the platforms, that is iOS and Android. So before we start, there are a few ground rules. Please stay on mute throughout the session and please write your questions in the chat box. We'll be taking up your questions from the chat box and please ask relevant questions. By relevant questions, we mean please ask question which is related to today's topic or today's session. Towards the end of the session, when we'll be doing Q&A, we might ask you to unmute yourself and just interact with Kanishka one-on-one. So yeah, that might also happen. So yeah, before that, please stay on mute throughout. Thank you, everyone. Now, Kanishka, you can take over. Thank you, Tanishka. Hello, everybody. We have about 11 participants. Shall we wait for 2 minutes more before we start? No, we can start. Okay, perfect. I'll start sharing my screen now. I hope my screen is visible. Yeah, it's visible. Okay, good. So, hello everybody. I am Kanishka and I am an acupressurist and energy subconscious healer. So today I'm only diving into the acupressurist part of my personality. I have a master diploma in acupressure from Nature Cure Hospital and Research Institute, Lucknow. I have been studying and using acupressure for healing for almost 2.5 years now. Before this, I was a software engineer at Microsoft for 6.5 years. And during that time, I got fascinated with the simplicity, elegance, and power of acupressure after I saw how powerful it was for my healing and my family's healing. And I felt after going deeper into acupressure, I felt like I had found my purpose. So I quit my job to pursue acupressure full time, dig deeper into it, learn more, and help people heal holistically. So the agenda of the workshop today is threefold. First is to bring awareness of acupressure and Sujok therapy. Some of you may be knowing about acupressure, but I believe Sujok will be a new thing for most of you. Second is to help you self-heal pre-existing acute ailments. So I see a lot of participants wrote that they are coming here with issues like constipation, heel pain, and other things. So you will get solutions to those issues also in the during the course of the workshop. And last and most important, and I cannot stress this enough, I want to empower all of you to self-heal yourself and your family for any future acute ailments. So anything that happens from today onwards, I want this workshop and the contents of Sujok to get imprinted in your head so that the next time you intuitively use acupressure to heal yourself and your family. And you will see how independent it makes you and how empowered you feel. You don't feel you need to rely on, you need to rely on a medical practitioner after this, at least for acute ailments. So I have few expectations from everybody who is here. First is because this is an alternative medicine and not a lot of research has been done on it, especially on the science side of things. Please keep an open mind to learn. It's okay that you are skeptical and it's okay for you to ask questions. That's why I'm here. But have the intention that this will work for you because it does. Okay, have the intention that I am here to learn a new thing
and keep your mind open. Third is be open to learning not just quick fixes for your problems, but also learning how to solve range of problems. Okay. And last, and again, I will stress this, that the workshop is targeted for acute issues. What I mean by acute is something which has happened over the last 1 or 2 weeks. Why I'm saying this is because today we are targeting only the very surface of acupressure. Sujok therapy is a very basic form of acupressure, and there are layers beneath that to help you solve chronic issues, advanced issues. Okay. So have that intention that this is for acute issues. Having said that, even for chronic ones, try this and see if that works, because oftentimes it does. I have a personal experience of my father who was suffering with plantar fasciitis, and even after physiotherapy sessions, he was not getting any benefit. Using just exactly what I'm going to teach you today, he was able to heal it within 15 days. Okay. So let's start. Let's start with the crux of acupressure. So acupressure means it's made of 2 words, acu plus pressure. Acu here means points. So acupressure is based on traditional Chinese medicine. The roots of acupressure are in China, and it involves applying pressure on specific points along the body. Now, what are these specific points? These are points along something called energy meridians. You might have heard this word, energy meridians. Okay. Think of energy meridians as a pathway in your body, which is transporting energy. Now, energy meridians cannot be seen. If you look at human anatomy, you don't see them because they are metaphysical. But each meridian has a function either related to an organ or to a system. And when you apply specific points along these meridians, it helps you balance the energy in that meridian, therefore allowing you to balance the energy of either that organ or the system. Now, I like to give a small analogy with this. So think of a drainage pipe in your home. Okay, just think of the drainage pipe beneath your sink. Now, if there is some blockage in that pipe, you will see that water accumulates in the sink. Also, water is not able to flow freely, and eventually, if you don't tend to it, it will start smelling. It will start attracting insects, rodents, and diseases eventually. The same thing happens with our energy meridians. If there is a blockage somewhere, it will cause energy upward of that blockage to get accumulated. It will cause energy downward of that blockage to be deficient. And in the energy blockage area, it will lead to inflammation, pain, because there's excess and blockage of energy, right? So think about it. Our bodies go through, every day they are going through digestion, excretion, repair, so many things, right? There is a tendency for meridians to get blocked. So today we are going to learn how to not unblock the meridians itself, but how can we apply a general form of acupressure to balance the entire body. Now, why I love acupressure is because firstly, it's non-invasive. I am extremely terrified of needles, and I have a lot of allergies when it comes to medicines. So acupressure doesn't rely on any of it. It doesn't need medicines. It doesn't even need needles, unlike acupuncture. It doesn't have any side effects. It promotes natural healing of the body. So you're essentially balancing the energy of the entire body. Therefore, you are allowing it to be in an optimal state of no diseases. You can also use it for prevention and cure both. So today we are going to talk about prevention and cure of diseases both, and acupressure is fantastic at it. It is low cost or no cost treatment. So today we are going to see how to apply pressure, which is no cost, and how you can use to continuously apply pressure without having to actively do it, which will become your low cost treatment. It is extremely easy to perform. Your acupressurist will give you the exact points and help you locate them. Once you have the location fixed, you can perform it at your home. The best two things that I love about acupressure is it is
excellent for diagnosis. In today's world, I feel a lot of therapists are not diagnosing us enough. And acupressure being a holistic treatment, it considers the body as not just the symptoms in a particular area, but as a holistic medium. So it is able to diagnose the root cause of issues by just seeing the symptoms. I'll give you an example. So somebody came the other day with a rash on their skin. Now they were having the rash for approximately 7 days. When I dug deeper, I found that they were also having issues with bowel movement. Now, when I applied my acupressure knowledge, I was able to know that your skin is controlled by lungs. This is an acupressure principle that your skin is controlled by your lungs. And lungs has a paired organ of large intestine, which is responsible for bowel movement. So of course, because there is a imbalance of energy in lungs, it is causing an issue in the skin as well as in their large intestine. Once I knew that, I was able to target not the skin, not the ointments, but I was able to target the lungs, balance the energy of the lungs. Right? So this is the power. And lastly, acupressure works as a complementary medicine also. What does that mean? If you're taking any kind of other treatment, you can use acupressure because it has no side effects and it's very natural in nature. So you can use it to complement and speed up your healing. So for example, somebody has, let's say, low hemoglobin, they have anemia. They're taking their supplements to increase blood in the body. Along with that, if you take acupressure, it will work wonders. Same with, let's say you get, you have a fracture. Of course, you have your painkillers and you have your fracture made. Along with that, you can speed up the healing by using acupressure, which will target your bone and muscle healing. So it works excellent as a complementary medicine. Now I think I have sold acupressure enough, and I hope you guys are interested for what we have for what I have to present now on, because this is where the crux of the entire workshop is. So take a moment and please pay attention now onwards, because this is very interesting. So we've covered acupressure. Now we are coming to Sujok. What is Sujok? It's a complementary alternative therapy developed by Professor Park Jae-woo from South Korea in 1987. So not too long back. This word Sujok is a Korean word which is made of two words, Su and Jok. Su means hands and Jok means feet. Sujok is based on the concept that your entire body can be mapped on just your hands and feet. But why would we need to do that? Why do we want to map our entire body? And what's so great about that? Firstly, think about it. Your hand and your feet are easily 1/20th of the surface area of your entire body. So you can target a very small area if you do the treatment on the hands. For example, I want to target knee pain. Knee is quite big, but if you target it on the hands, it becomes this small. So very specific targeted treatment can be done. The second is, it is great to do for hard to reach places. So most of us cannot reach our back, right? Upper back, mid back, even lower back. But on your hands and feet, you can, right? You can reach these places. So it helps you do treatment on hard to reach places. Third is, it is easy to do for old people. So many old people you'll see are preferring acupressure treatments because they lose flexibility and mobility with age, but they are able to do it with their hands. They are able to do the treatments on their hands. And fourth is, it increases the effectiveness by 4 times. Why? Because if you have any one issue, but you have 2 hands, most of us have 2 hands, 2 feet. So we can apply treatment for just one issue in 4 places. Therefore, the effectiveness becomes 4 times. And it does work. I'm not kidding. And you might be thinking, maybe that's not possible, but it is very, very possible. It works wonders and very quickly when you do treatment on 4 body parts.
So now let's come to body mapping on hands and feet, which is Sujok. Let's see how do we map the entire body on our hands first. So first thing with Sujok is you do not keep your hands like this. You turn your hands. Okay. The first thing you do is turn your hands, because this is how you map the body and this is how you remember how to map the body. Okay. Now, if I do this, think about it. If I just move my fingers like this, don't these two kind of look like your legs? Is it, can you see that correspondence? Can you also see that these might be our hands? The first and the pinky finger could be our hands. If this palm becomes the torso, torso meaning everything from the neck down to the hip. If this is your torso, you have your legs coming down, you have your hands extending outwards, and you have your face and neck as the thumb. Can you see that analogy? Can you see that correspondence? Please let me know in the chat box if this is not clear and I'll repeat it. I think it's clear. So the entire palm is your torso. Okay, I'll repeat. The entire palm is your torso. Okay. Everything, what all is connected to your torso? In your body, what is connected to your torso? You have two arms. You have two legs down, and you have a neck and a head. Everything is connected to the torso, correct? Even in your hands, if the entire palm area is your torso, can these two be your legs? The middle finger and the third finger? The ones extending outwards, can these be your hands? Can this be your neck and head? Yes, that's how correspondence in Sujok works. Okay. You have everything connected to your palm or your torso, and this is what we have. I'll show you one more very beautiful correspondence. Let's come to the legs. Okay, let's talk about the legs now. In your legs, you have three joints. You have a hip joint, a knee joint, and an ankle joint. Can you see in these two fingers three joints? Can you see that? You have a joint here connected to your palm. You have another joint here, the middle joint. You have another joint here, the ankle joint. How did I come to know that? If I keep my hand like this, what do you have in your body? What is connected to your torso? Your hip joint. So these become your hip joint. After that, you have your knee joint. So the middle joint becomes your knee joint. After that, you have your ankle joint. This becomes your ankle joint. So between the hip and knee joint, you have your thigh. Between knee and ankle joint, yes, you have your calf and shin. And after your ankle joint, you have your feet. Isn't it so beautiful how the body is reflected in our hands? Three joints, the same you see in your hands, right? Now, how can we use this? Anybody who's having hip joint issues, pain, any kind of muscular issues here, can you apply pressure to this area, this joint, the joint connected to the hand? I'll show you how to apply pressure, but this is where you give the treatment. Anybody, most of us, most of our parents at least, are having knee pain issues, arthritis, old age issues. Somebody could be having ligament tear in their knee. Can you give them treatment here so that it speeds up the process of healing? Those of us who go to gym have thigh cramps often. Can you give treatment in this area to relieve thigh cramps? Again, cramps of the shin, cramps of the calf.
Can you give treatment in this area? Now, if this is the ankle joint, ankle sprain. I'm not kidding. I went to Goa once and I got my ankle sprained. I had to ask somebody to get me a painkiller spray, but that didn't help me a lot. It was temporary only. All I did was keep pressing this point. I will show you how to press that point. But as a first aid for whole one day, all I could do was press this point, and I was able to get through that day. Okay. Now, if this is your feet, anybody who has burning soles of feet, right? Burning in their feet, burning in the sole. Anybody who has plantar fasciitis, pain in heel. I think somebody said that. This is where you apply, because this is your feet. This is where you apply the treatment. And this is exactly what I applied for my father when he had plantar fasciitis, right? So remember, these two represent your legs, both your legs. In left hand as well as in right hand, both. These two represent your legs. Remember that. How do you remember that? You always turn your palm like this. The middle two become your legs. Cool? Okay. Now, if these two are legs, I said we can think of our body as two arms also extending outwards. Can you see how your first and pinky finger extends outwards? This becomes your arms. Okay. So this finger and this finger, these two become your arms, right? Now, even in arms, don't you have three joints? There's a joint connected to the body, which is the shoulder joint. Then you have another joint, elbow joint. Then you have the wrist joint, and you have your hands. Can you see the exact same correspondence in your hands also, in your fingers? You have three joints, 1, 2, and 3. You have one joint connected to the body. This will be your shoulder joint. After that, you'll have your elbow joint. After that, you will have your wrist joint. Between your shoulder and elbow, you have your biceps. Between your elbow and wrist, you have your forearms. After your wrist, you have your hands. In this finger, as well as the pinky finger. Because how do you see that? It extends outwards like this, towards the sides. You can do that with your hands, right? Now, how do we use this knowledge? People who are getting frozen shoulder. Most of us are not moving enough and have shoulder issues, immobility, inflexibility in shoulders, stiffness in shoulders. This is where you apply. Those of us who get bicep cramps after gyms, this is where we apply this is where we do the treatment. Elbow joint, tennis elbow, any tear, ligament issues in the elbow, this is where you apply. The mid joint, this is where you apply the treatment. Forearm issues, this is where you apply the treatment. Again, wrist joint, tears, fractures, pain, this is where you apply the treatment. If you're getting burning in your hands, in the palm of your hands, any wounds, inflammation in hands, this is where you apply, this part. Now, is this clear? Are we clear with the limbs? If there's any issue till now, please let me know. You can write your questions in the chat box if you have any issues. I think it's clear. Perfect. So, awesome. So this is clear. Both hands, the middle two fingers will be your legs. The first finger, the index finger, and your pinky finger will be your hands. Both hands, right? The same correspondence works. Now let's come to your thumb. I will come to how left and right is associated. I'll cover that also. But for now, just see which part of the body corresponds to which part of the hand. Okay. Yeah. So let's come to the thumb. I said we have a torso and everything else is connected to it in our body. We've covered the limbs. What else is connected to the torso? Our neck and our face.
The same thing is here. Can you also spot a very beautiful correspondence? Our thumb only has 2 joints. Unlike the fingers, which have 3 joints, our thumb has only 1 joint here, 1 joint here, nothing in between. Doesn't our neck and face also work like that? We have 2 joints only. One is the neck, one is this nape of the neck, one is the girdle of the neck. 2 joints only, right? If that is the case, I start from the top till the first joint becomes my face. After the first joint becomes my neck. Correct? What can I treat on the face? Any issues of the eyes, dry eyes, watery eyes, weak eyesight, inflammation of eyes, pain in the eyes. What can I treat in the head? Headaches, migraines, everything. Hair fall, all that can be treated in the head. Nose issues, you have sneezing, you have cold, sinusitis, all that can be treated. Lips, if you get on changing weather, some people get it. Dryness of mouth, dryness of lips, acne, all that can be treated here. What can you treat in the neck region after the first joint in between this area? What do you have in the neck? You have your throat. So any kind of itchiness, bad throat, strep throat, thyroid, exactly. You have your thyroid, you have your throat chakra here, you have your thyroid gland here, all of it you treat here, right? Now, if this is the front, so this is the front of the body, okay? This is how we map it. This is the front, this becomes the back. So now what can I treat in the back of the thumb? So many of us who are sitting 8 to 10 hours in front of the computer will get stiffness here, right in the nape of the neck. This is where you treat. Up till the first joint, below the nail. That becomes the base of your neck. Cervical. How many of us are feeling pain in the cervical right now? Can you treat? Can you see a bone going here? That is your correspondence for cervical between this first joint and second joint. All your cervical bones are here. You can apply pressure here, right? Any issues in the thumb area? Okay, I'll show again. For cervical, I'll show again. Okay. So these are the joints, okay? Yeah, Sony, Hiran, and other people who are facing issues, take your thumb, look at it also, as I'm showing. So this is your first joint. You can see mobility here. You can see mobility here. This is your second joint. This whole area is your face and neck, okay? Body से क्या connected रहता है? Neck. So this becomes your neck joint. What is connected to the palm, correct? Neck के ऊपर क्या होता है? Face. Face is connected to the neck through a joint. So this becomes your face. ये पूरा area top से लेके bottom तक यहाँ तक. This becomes your face. This becomes your neck. Okay. अगर neck आपका ये है and this is the front. When I turn my head back and I plot the same joint here, neck के इस joint के बाद ये सारा area आपका cervical हो जाएगा. Till this joint, because this is where your neck ends, right? So you apply pressure here in this area. Clear now? Okay. Now, okay, what about the area between nail and this? I guess this is what you mean, right? This is the back of your head. This area that I have circled is the back of your head. Okay, occipital जिसे बोलते हैं. यहाँ पे जिसके दर्द होता है. Yeah, I will show you how to apply the pressure. All that I will show you now. Just look at the correspondence first of all. So this is this part, not your neck. This part
नेल और फर्स्ट जॉइंट के बीच में ऑक्सीपिटल एरिया, जिनको यहाँ पे दर्द होता है बैक में. सर्वाइकल इज ये नीचे जो शोल्डर के आसपास आता है, दैट एरिया इज सर्वाइकल. तो जिसको वहां पे पेन है, दे विल अप्लाई प्रेशर हियर. जिसको ऊपर हेड में पेन है, दे विल अप्लाई प्रेशर हियर. ओके, नाउ आई विल कम टू प्लॉटिंग ऑन द फेस. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं. अभी आप देखो, एवरीबडी टेक योर थंब एंड उसको ऐसे sideways, just look at it sideways. You will notice there's a small area just in the center of the thumb, which is protruding a bit outwards. Everybody do this exercise. There's a small area protruding outwards. Can you see in the face also? There's one area that protrudes outwards. Isn't it our nose? So if that is the case, if I plot, I can first say that this is my nose. For me, the protrusion ends here. Okay. So just in the center of the face, just like I have my nose in the center, I have a nose in the center of the thumb. On the each side of nose, I have my eyes. This is where I plot my eyes. Just below the nose, this is where I have my mouth. This line becomes my mouth. Below this, I have my chin. Above my eyes, I have the forehead. On the sides of my face, I have 2 ears. My ears will be here and here. How did I plot them? My ears are approximately at the same height as my eyes, just a bit down. So on the sides of the thumb, just below where you have plotted the eyes, you plot your ears. You do the same thing on both hands. Okay. The correspondence remains same, just the direction changes. I will tell you how to do that. But this is exactly the way you plot it. Okay. Now, how do you use this? Aside any issues of the eyes, those of us who are getting pain here in the eyes, those of us who are getting watery eyes, dry eyes, we apply pressure here. Yeah, I'll come to that. We'll apply pressure here. Okay. If you're getting constant sneezing, you're getting sinusitis, a lot of pain here. And if you don't feel like applying pressure here because it pains too much, you can apply pressure here, right? It will help you train the sinuses. If you're getting toothache, if you're getting dry lips, bad breath, you can apply pressure here in the mouth region. Those of us or our parents who are getting deafness, right? They're feeling a ringing in their ears, or any inflammation, any pimple, any boil in the ear, right? Pain, severe pain. You can apply pressure on the sides of the thumb, right? So Purnima asked me, please explain the sides once. Just on the sides, just like you have ears on the sides of your face, you can draw correspondence of your ears on the side of your thumb, right? Exactly where you've drawn your eyes, exactly on the side of it, both sides, you have your ears. Okay. If anybody is right now feeling a pain in their ears, try pressing this point. Okay, I will show you how to press it, but intuitively, whatever you feel, try pressing. You will feel a pain in that area. All of you, so far, whatever we have discussed in your limbs, joints, face, neck, cervical, if you apply pressure to it right now, you will feel a pain. And those of us who don't feel a pain will also not have pain in the body in that area also. Okay. Yes, Purnima, where the protrusion ends is where the nose point also ends. Okay. And it's okay if you don't, you can plot it approximately because this is a very small area. It will help you target even the area that you want. Okay. So it's okay. Even if you go pressure to another area, there's no side effect.
But you should know exactly where to plot because we are going to learn seed therapy also. Okay. So far we've covered everything connected to the torso, our limbs, and our neck and head. We've covered the front part of it. Let's come to the back. We've covered cervical, we've covered occipital. What else? What major part of the body is located on the back? The spine, right? The spine is part of the central nervous system and a very important part of our body. Most of us right now will be having lower back pains. If not us, somebody will know is having lower back pain. Somebody is having sciatica, somebody is having slip disc, right? You will hear this very commonly. Where do these happen? They happen in the spinal region. How do we plot the spine? Where does our spine run? It runs in between our legs, right? Exactly in between the legs up till the neck. We said these two are our legs. What happens if I split them? This becomes the center. All of you try it right now. You will feel a hollow channel. On both sides, you will have bones. There's a hollow channel in the middle, just in between your middle two fingers. Starting from here up till goes up to the top. This whole hollow channel is your spine. Okay. This hollow channel is your spine. Now, if this is your legs, what will this part be? This will be your tailbone. Correct? How many of us are having pains in the tailbone? Sciatica. Sciatic nerve starts from here. Everybody here, they can press this point and they will feel a pain. Okay. Now you can divide the spine into approximately three parts. If I divide it like this, the lower part, which is connected to the legs, becomes your lower back. So everybody feeling pain in the lower back, can you press this area? Everybody feeling pain in their mid back? As you keep going up, this is how you're plotting it, right? This becomes your lower back. After this becomes your mid back. After this becomes your upper back. Correct? Easy? What else do we have in the back of our hand? We have two kidneys. They are on either side of the spine in the lower region, right? Even in your hand, just like this hollow channel, you will see hollow channels here also. Two more hollow channels you'll see on your palm, on the back side of your palm, right? This is where your kidneys are. So exactly where you plotted the lower back, same area mein, in the hollow channel, you will plot your kidneys. I'll show you. This becomes your kidneys. Okay. So people who are having kidney stones, people who are having infections, inflammations, any issues of the kidney, this is where you give the treatment. Okay. Same thing happens on your right hand also. If these are your legs, split them. The hollow channel in between becomes your spine. This becomes your lower spine. As you keep going up, becomes your mid and your upper back. Another hollow channel here, you'll find your kidneys. Cool? You do it on both hands. Both hands. Yes. Right? You also do it on your foot. We'll come to how to do it on your foot. But that's essentially what we are doing. For one issue, if you have lower back, why not do the treatment on 4 different parts, right? Increase the effectiveness by 4 times. Okay. So far, we have covered everything connected to the torso, front and back. Both sides we have covered. Correct? Just to give a recap, middle two become your legs. These two are your hands. This is your neck and face. This is the front side of the body. This is the back side. Always keep your hand like this. This becomes your spine. This becomes your kidney. This becomes your cervical. Okay. Yes, you have to press on both hands.
Okay. Now we'll come to a little more complicated segment, which is plotting organs inside the torso. Okay. Please pay attention here. It will be a little more complicated than what we have covered because organs ke saath hai. But I'll try to make it as simple as possible. Okay. So we'll all. By the way, I will be giving this PDF in the group after the workshop ends. So you can take a look. You can keep your notes also, right? Now we've covered all of this. We've covered the back. Now we'll come here, organs. Okay, so if you see the torso, right? Everything from the neck down up till the hip. What all organs do you have starting from the top? You have lungs on both sides of the chest. You have your heart, right? After that, you have your abdominal region. Abdomen में क्या क्या रहता है? You have your liver and gallbladder together. You have a stomach. Then you have spleen, pancreas. After that, you have your excretion system, which is your intestines, right? I hope most of us know this kind of, right? Approximately, we've heard this at least, right? इसको कैसे plot करेंगे हम? The first thing we do is always keep our hand like this. Imagine करेंगे पूरे torso region को in 3 equal horizontal parts. I will draw those lines first. Starting from wrist. Okay, wrist is where you start from. यहाँ से लेके यहाँ तक. So I have drawn approximately 3 equal parts of my hand. Okay. Remember, this is the top of your body. This is how we are plotting, right? ये top है body का, and this is going down, right? So if this is the top 1/3 portion में, you will have your lungs and heart. Okay. So यहाँ पे both sides becomes your lungs, because lungs side में रहता है हमारे body में, chest में. Okay. Heart kind of in the middle. It's although to the left side, but to the middle and to the left a bit. This is how you plot your lungs and heart. Why I'm telling you this, we'll come to that. Okay. ये organs आपको अभी शायद use नहीं होंगे, but when they are paired with other problems, they use होंगे. तो इसलिए आप सुन लो ये. You can refer to this PDF afterwards. Okay. But कैसे plot करना है? Remember this. Starting from the top, lungs both sides, heart in the middle. After that, center में होता है हमारा stomach. This becomes your stomach. Stomach के right side में. By the way, right and left जब मैं बोल रही हूँ, it is my right and left, not how you are seeing it. Okay. तो ये मेरे हाथ का, ये अगर सेंटर है, उसका इधर सारा मेरा राइट है, इधर मेरा लेफ्ट है. ओके. तो मेरे ही राइट में क्योंकि लिवर होता है, तो यहाँ पे भी स्टमक के राइट साइड पे I will plot the liver. This becomes your liver region. Liver के bottom में होता है gallbladder. This small area is your gallbladder. Okay. Stomach के left में you have your spleen and pancreas. Spleen ऊपर होता है. Pancreas is a leaf-like structure at the bottom. So this ऊपर is spleen, यहाँ पे pancreas. Okay. अब let's first discuss how to use them. Lungs. जिसको भी problems in breathing हो रहा है, जिसको भी asthma हो रहा है lungs का, you can apply pressure here, right? 1/3 portion में ऊपर you apply the pressure. जिसको भी liver के issues हो रहे हैं, by the way, somebody asked me for indigestion. Indigestion doesn't only happen in the stomach, it happens with the liver also, because liver is like a big lab in our body. So whenever you feel indigestion, this is where you press on your liver and on your stomach, both, because acid stomach में produce हो रहा है और
लिवर साथ में काम करता है, ठीक है, बोथ एरियाज यू विल अप्लाई। स्प्लीन किसको जरूरत पड़ेगी, ऊपर जो है स्प्लीन प्रोड्यूसेस our cells. It is important. It is used for our immunity. Yes, you can use it for fatty liver also, Sheetal. Great point for fatty liver. Okay. स्प्लीन यूज होगा इम्यूनिटी के लिए, जिन लोग की इम्यूनिटी थोड़ा वीक रहता है, इन्फेक्शंस बहुत बार लग जाते हैं उनको, यू विल प्रेस स्प्लीन पॉइंट। इवन स्प्लीन में कंटेन्स आर रेड ब्लड सेल्स, सो जिनको अनीमिया के इश्यूज रहते हैं, प्रेस हियर। ओके। पैनक्रियास, pancreas are responsible for producing insulin. Those of us who are on the borderline of type 2 diabetes, before eating your food, press pressure, give pressure here. नहीं याद रहता आपको तो before food, before you have your lunch, dinner, breakfast, close your fingers. आप देखोगे very beautifully your fingers come to the area of your pancreas, your stomach and your liver. For 2-3 minutes इस तरीके से give pressure. Okay. जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटो इम्यून डिजीज विच इज टाइप 1, टाइप 2 जो होता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज एंड पैनक्रियास प्रोड्यूसिंग लैक ऑफ इंसुलिन, जिनको इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हैं एक्सटर्नली, दिस इज वेर यू अप्लाई प्रेशर। ओके, दिस इज हाउ यू यूज दीज। Yes, somebody asked me the diagram shows liver towards the thumb. I'll tell you why. This is we are looking, the diagram that you see is for the right hand. I'm showing on the left hand. Okay. Our hands are mirror images. I'll show you why that is the case. Okay. ये left hand का है. Actually आपने अच्छा बताया मेरे को. I will open the diagram for left hand. Okay. Now, the last thing जो हमारे lower 1/3 पे होता है are our intestines. Correct? Intestines पहले large intestine है, बीच में small intestine होती है. So large intestine covers the entire portion. Start होता है इन दोनों फिंगर्स के बीच, ऐसे जाएगा एंड खत्म होता है इन दोनों फिंगर्स के बीच। करेक्ट? दैट इज हाउ आवर इंटेस्टाइन्स एंड। इस एरिया के बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, दिस होल एरिया एक क्लाउड जैसा, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा अगर ये दो हमारे लेग्स थे, लेग्स के बीच में हमारा और क्या होता है? एक्सक्रीटरी एंड reproductive organs. So you have your bladder, urethra, uterus, and all reproductive organs here. Okay. अभी इसको कैसे यूज करेंगे? Large intestine, what is it responsible for? For bowel movement. Okay. तो जिन लोग को constipation होता है, somebody asked me for constipation. This is the treatment for constipation. आप इस एरिया को प्रेस करोगे, you're basically allowing more energy into the large intestine to move and excrete the stool. Okay. तो आप lower 1/3 में पूरे में आप प्रेस कर लो. Okay. This becomes a treatment for constipation. जिनको small intestine के issues है, small intestine में क्या issues होते हैं? Malabsorption के, IBS के. Okay. या फिर if you see कि stool में more often color pigment निकल रहा है किसी भी टाइप का, आप खा रहे हो और वो ऐसे का ऐसा निकल रहा है, फूड पार्टिकल्स निकल रहा है, पिगमेंट निकल रहा है ऐसे, all that is problem with the small intestine. Small intestine is responsible for absorption. So if you see कि absorb नहीं हो रहा है food, this is where you press. Anybody having stones in their ureters? Okay. Anybody having infection in their urinary tract? UTI जैसे बोलते हैं. कहाँ पे होता है? Legs के बीच में होता है ना, यहाँ पे. As soon as you feel you got an infection because you used a public bathroom, start pressing this area. Let the energy of your body flow into this area and fix that infection for you. Okay. Now, having said that, I am not saying कि आपको इसके साथ साथ कुछ और नहीं करना होगा, because infection spread very fast, especially bacterial infection बहुत जल्दी populate होता है. तो अगर आपके पास अभी exactly आप कुछ ले नहीं सकते, you can't take cranberry juice, you can't take a medicine, start pressing this area as soon as you think कि infection हो गया. Women
get UTI very quickly. How long? I'll tell you. How long and how to press, I will tell you. Okay, but remember this area in between your legs होता है. Remember this area always. जैसे आपको लगे constipation थोड़ा लग रहा है, ये एरिया प्रेस करने लग जाओ. ठीक है? Is this clear? Anybody has issues in this? I know थोड़ा सा loaded था, थोड़ा ज़्यादा complicated था, but let me know if you have any issues. Yeah, I think this is clear. I'll just give you a recap quickly. Meena, both hands. I'll tell you how in both hands, but आपको नहीं याद रहता, कुछ नहीं याद रहता. आपको ये तो याद है ना, अगर ऐसा हमारा बॉडी है, ऊपर लंग्स होगा, बीच में आपका सारे डाइजेशन वाली चीजें होंगी, नीचे आपकी एक्सक्रीशन वाली चीजें होंगी. ठीक है, ये तो याद है. सिंपली ऐसे प्रेस कर लो या दूसरे हाथ से कर लो. ऊपर करोगे लंग्स के सारा एरिया आएगा, बीच में डाइजेशन का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आएगा, ऊपर एक्सक्रीशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आएगा. दोनों हाथ में कर लो, 1/3 अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करके ये कर लो. बस 4 फिंगर्स लेके पूरा पूरा एरिया में आप कर दो, बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. ओके, नहीं भी कुछ याद रहता, यू विल हैव दिस पीडीएफ, बट नहीं याद रहता है कई बार, बट ये तो याद रहेगा ना, ओवरऑल क्या है सिस्टम अपना बॉडी में वो तो याद रहेगा. बस उसको प्रेस कर दो. ठीक है, अब I'll discuss how to press. वो बार बार आ रहा था. could say pain in abdomen? Yes, pain in abdomen बहुत जल्दी काम करता है यहाँ पे बीच में. अब पेन इन एब्डोमेन ना बहुत चीजों की वजह से होता है. गैस की वजह से भी हो सकता है, एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है. और गैस क्यों बन रही है? क्योंकि इंडाइजेशन नहीं हो रहा. तो आप सारा एरिया प्रेस करोगे, यहाँ से डाइजेशन वाला भी और एक्सक्रीशन वाला भी. ओके, whenever you get pain in abdomen, press the middle and the lower area. सब कुछ प्रेस करना है. ओके, नाउ ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम शीतल अवॉइड. ओके, और अगर आप कर रहे हो तो प्रेशर बहुत सॉफ्ट रखो. ठीक है, why I'm saying this is because ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है. On your hands you will also have points, other points जो क्लैश कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के साथ, तो अवॉइड किया जाता है. बट जैसे आपको मेंस्ट्रुएशन में लोगों को लोअर एब्डोमेन पेन होता ही होता है, कई लोगों को होता है, तो आप यहाँ पे सॉफ्ट प्रेशर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो. ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग एंड पाइल्स. यस, बैक साइड पे आपका रेक्टम और एनस होता है, जस्ट बिलो योर स्पाइन. करेक्ट, यहाँ पे दिस एरिया, ये नकल्स के नीचे. ओके, टिल दिस एरिया जो कनेक्टेड है, ये पूरा आपका रेक्टम और एनस है. जिनको भी पाइल्स, ब्लीडिंग, पेन, हेमोरॉइड्स, स्पेशली आफ्टर पासिंग स्टूल, जिनको भी पेन होता है, थोड़ा सा ऑयल लेके सॉफ्ट सॉफ्ट यहाँ पे आप प्रेशर दोगे, यू विल फील क्विक रिलैक्सेशन आपको मिलेगा. ओके, ठीक है. यस, एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, हाउ लॉन्ग टू प्रेस एंड हाउ टू प्रेस. कैसे करना है? ऑल ऑफ यू विद मी, अपना डोमिनेंट हैंड का इंडेक्स फिंगर और थंब उठाओ ऐसे. ठीक है, एल शेप में. इंडेक्स फिंगर को आप बेंड करके एक हुक बनाओगे, इसे बोलते हैं हुक पोजीशन. ठीक है, ये एक्सटेंड करोगे, ये आपका बन गया हुक. ये हुक मोस्ट चीजों के प्रेशर देने के लिए यूज होगा. कैसे होगा? आप देखोगे यहाँ जब आप साइड से प्रेशर लगाओगे, इस पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है. ठीक है, तो मान लो अब जैसे हम नी जॉइंट की बात कर रहे थे, नी जॉइंट कौन सा है आपका? इन दो फिंगर्स के मिडिल जॉइंट. कैसे लेंगे? ऐसे क्लैंप करेंगे साइड से. ठीक है, क्लैंप किया, ट्विस्ट किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. ठीक है, साइड से कर दिया. अभी सारा तो नी जॉइंट नहीं कवर हुआ ना, साइड्स हुए सिर्फ कवर. अब मेरे को फ्रंट एंड बैक भी करना है. सेम पोजीशन, क्लैंप करके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. तो जितने भी आपके जॉइंट्स होंगे लिम्स के सारे, आप इस तरीके से ही प्रेस करोगे, प्रेस एंड ट्विस्ट, ऐसे हुक बना के. क्योंकि आप देखोगे अगर आप नॉर्मल अगर फिंगर से करोगे ना, वैसा नहीं प्रेशर आएगा.
जब आप ट्विस्ट करते हो बहुत अच्छे से प्रेशर आता है, ठीक है। तो आप ऐसे हुक बना के प्रेस एंड ट्विस्ट करोगे, आप सारे जॉइंट्स को प्रेस एंड ट्विस्ट करोगे। ओके, कितनी बार करना है? 5 to 10 टाइम्स। जब तक आपको पेन में थोड़ा रिलीफ ना मिले तब तक आप करो। यूजुअली 5 to 10 टाइम्स में मिलने लगता है, ठीक है। कैसे करना है? प्रेस एंड ट्विस्ट तो करना है, बट बीच बीच में छोड़ना है। तो मान लो आपने ऐसे 3 बार किया, 1 सेकेंड का पॉज दे दो। अगेन रिपीट इट 3 टाइम्स, पॉज, रिपीट इट 3 टाइम्स, पॉज, सेम, ठीक है। वन थिंग टू रिमेंबर इज एक्यूप्रेशर, कोई भी टाइप का प्रेशर आपको फूड खाने के, आपके लंच डिनर ब्रेकफास्ट के आसपास नहीं करना। एज इन keep a gap of at least 1 to 2 hours after and before your meal to do acupressure. Why I'm saying that is because digestion is a very energy intensive process in the body. सारी एनर्जी हमारी बॉडी की डाइजेशन के टाइम पे उसी एरिया में होती है। अगर आप मान लो आपको नी पेन है और आप ये करने लग जाओगे, वो एनर्जी डाइवर्ट होकर आपके नी में चली जाएगी। एनर्जी तो सेम ही है। We don't want that. Undigested food is the cause of so many problems. Okay, so digestion के साथ नहीं clash करने टाइमिंग्स। बेस्ट टाइम फॉर acupressure is सुबह आप जब उठते हो तब, because you have breakfast usually around at least 1 hour बाद। So after you wake up and before you go to sleep, because dinner के बाद भी usually 1-2 hours का gap रहता है before you sleep, that is when you do acupressure. Okay, these are the best times. उसके अलावा आपको बीच में करना है बिकॉज पेन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, जस्ट एंश्योर कि खाने के आसपास नहीं कर रहे हो। 1 से 2 घंटे का गैप डालना है। ओके सोनी, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? टाइमिंग इज यस, ईदर मॉर्निंग। बेसिकली आपको मील के आसपास नहीं खाना है, नहीं करना है। मील, कोई भी मील आपका जो मेजर मील रहता है उसके 1 आवर का से 2 आवर्स का गैप देना ही देना है। ओके, मॉर्निंग एंड नाइट में वो हो ही जाता है, इसलिए आप वो प्रेफर्ड टाइमिंग्स रहते हैं। पूरे दिन में जस्ट आप मील्स का ख्याल रखो। ओके, सो जॉइंट्स में प्रेशर देना कैसे? क्लैंप बना के ऐसे प्रेस गैप और हुक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये हो गया आपका जॉइंट्स का प्रेशर। स्पाइन में आप कैसे दोगे, क्योंकि स्पाइन पूरा है, ठीक है। बेस्ट तरीका रहता है आप दूसरे हाथ के चारों फिंगर्स लो, आप देखोगे बहुत इजीली ये सारा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रेस कर दो पूरे एरिया को। कैसे करना है? 3 टाइम्स प्रेशर, रिलीज, 3 टाइम्स प्रेशर, रिलीज। प्रेशर ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत हार्ड, मीडियम प्रेशर विल कीप। 3 टाइम्स प्रेस एंड रिलीज। अगर आप मान लो फेस के लिए कर रहे हो, अब आपको यू फील यू हैव एक्ने ऑल ओवर द फेस, पूरे एरिया को प्रेस कर दो ऐसे हुक बना के, वही जो पहले बताया, पूरे एरिया को यू विल प्रेस। ओके, hair fall, because hair fall often happens because there is lack of blood and nutrients that are transported to the head. How do you ensure कि वो nutrients जा रहा है? Press the top of the head like this. Same way, clamp, press, release, press, release, ठीक है। मिड ऑर्गन्स में आ गए। मिड ऑर्गन्स में एक तो ये तरीका हो गया उसी हैंड से करने का। The other method is same 4 fingers of the other hand, full area if you want to press like this. If you want to concentrate on a particular organ, let's say you are concentrating on intestines, you can use your thumb. Thumb bhi, it gives a good amount of pressure. You can use thumb. ठीक है। किसी को भी यहाँ पे issues आ रहे? Piles और bleeding के लिए किसने पूछा था? Same way. Okay. Press and release याद रखना बस। मतलब बहुत, you don't have to keep pressing it for a long time. Press, release, press. उससे क्या, it is like a pulsating movement, right? You are allowing energy to pulsate, to go there. Piles, Sony, so where in between your legs, right? On the back side, you have your rectum and anus, correct? Back side पे रहता है हमारे body में. So this, if these are your legs, इसके back side पे you will have your rectum and anus. So piles, hemorrhoids, fissures, all those kind of things,
दिस इज वेयर यू प्रेस। ये नकल्स के बीच में बिल्कुल लोअर बैक ये हो गया ना, यहाँ पे आप प्रेशर दोगे। एक्ने का रोहिणी, इफ यू आर गेटिंग एक्ने ऑन द फेस, राइट, दिस इज योर होल फेस, टॉप ऑफ द हेड, ये आपका फर्स्ट जॉइंट ऑफ द थंब, दिस इज योर होल फेस। अगर आपको फुल फेस पे एक्ने आ रहा है ऐसे करो आप प्रेस, ठीक है। अगर आपको चीक्स पे आ रहा है आप साइड्स में कर सकते हो, फोरहेड पे है ऐसे कर सकते हो, ओके। एक और चीज बताती हूँ मैं, एक्ने जिनको हार्मोनल बैलेंस की वजह से होते हैं, you might be knowing we have a gland called pituitary gland in between our eyebrows, ठीक है, बॉडी में यहाँ पे। pituitary is the master of all hormones, most hormones, okay. pituitary releases hormones responsible for thyroid also, which in turn can affect your acne also, ठीक है। so जब आप एक्ने का ट्रीटमेंट करेंगे, आप फेस पे तो कर ही रहे हो, आप अपनी इस एरिया को भी स्टिमुलेट करो, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली यहाँ पे है इन बिटवीन योर आईब्रोज, ओके। और हैंड की कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी, जहाँ पे आपने आईज बनाए हैं उनके बीच में, ओके, यू विल हैव योर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसको भी आप प्रेस करो। तो थायराइड इश्यूज एंड हार्मोनल इश्यूज जिनको हो रहे हैं, यू प्रेस हियर आल्सो, ओके। I have mentioned all these pairings I have mentioned in the slide. आपको ये slide मिलेगा, you can refer back to it, okay. Now हमने hand पूरा cover कर लिया, but अभी हमने left hand cover किया, ठीक है। Lot of people were asking me कि right और left में क्यों अंतर है, क्यों है? These are mirror images of each other, right? हमारे hands are mirror images, so सब कुछ mirrored होगा यहाँ पे। If you don't understand the mirrored principle, आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपको अपना हैंड ऐसे रखना है फॉर सुजोक, आप सबसे पहले अपना हैंड ऐसे रखोगे, जो भी आपके उस हैंड का, आपने जो भी हैंड लिया है उस हैंड में जो भी राइट होगा वही आपकी बॉडी का राइट है, और जो भी लेफ्ट होगा वही उस हाथ, उसी आपकी बॉडी का लेफ्ट है, ईदर हैंड, ओके। तो अगर मैं अभी राइट हैंड देख रही हूँ यहाँ पे, बाय द वे ये मेरा राइट है, ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, ये मेरा राइट है। अगर ये मेरी बॉडी का सेंटर है, ठीक है, लेग्स के बीच में सेंटर है, सब कुछ इसके राइट साइड पे बिकम्स राइट ऑफ माय बॉडी, सब कुछ इसके लेफ्ट साइड पे बिकम्स लेफ्ट ऑफ माय बॉडी, सिंपल है। तो इन दो लेग्स में राइट लेग कौन सा होगा? मिडिल फिंगर बिकम्स माय राइट लेग, क्योंकि वो राइट में है, करेक्ट। थर्ड फिंगर लेफ्ट लेग हो जाएगा, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड हो जाएगा, पिंकी फिंगर लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इसके बीच में यहाँ पे लिवर राइट साइड में होता है, तो वो थंब की साइड में होगा लिवर। कोई मुझसे पूछा था कि मैम इमेज में तो थंब की साइड पे दिख रहा है लिवर, हाँ दिखेगा क्योंकि ये राइट हैंड है, ओके, ऑर्गन्स ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द राइट हैंड। तो यहाँ पे क्योंकि लिवर आपकी बॉडी में राइट में होता है, तो वो यहाँ पे दिखेगा राइट साइड ऑफ द हैंड में, जो थंब के पास है। बट वही मैं अगर लेफ्ट हैंड करूं, अब लेफ्ट हैंड में राइट क्या है? अवे फ्रॉम द थंब है, तो लिवर यहाँ पे प्लॉट होएगा, ठीक है। सेंटर आप क्या मानोगे? सेंटर इज लेग्स के बीच का सारा पार्ट इज द सेंटर, उसका राइट में चीज है राइट, उसका लेफ्ट में लेफ्ट। तो इस हाथ में अगर मैं लेफ्ट हैंड देखूं, माय राइट लेग इज द थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर बिकम्स माय राइट लेग। तो जिनको लगता है यार दोनों पैर में नहीं दर्द है, राइट नी में दर्द हो रहा है, या फिर somebody asked me for foot heel pain, राइट, आप देख लो आपके कौन से हील में पेन है। अगर राइट लेग की हील में पेन है तो आप थर्ड फिंगर पे करोगे, यहाँ पे करोगे। क्यों करोगे? मैंने मिड लिया, उसका राइट का सब राइट, उसके लेफ्ट का सब लेफ्ट, तो ये मेरा राइट लेग हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट लेग, ये लेफ्ट हैंड। बट यहाँ पे सब कुछ मिरर हो जाता है, ठीक है। अगर ये अभी नहीं ध्यान, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस, यू हैव दीज इमेजेस। एक बार आप इनको देखोगे, आप खुद प्लॉट करोगे, विद इन वन टाइम यू विल
it will be clear to you. Okay. Hiran, for constipation and indigestion, देखो constipation आपको क्यों होता है, digestion issues क्यों हो रहे हैं, यहाँ नीचे वाले एरिया में होता है, right? Constipation is primarily related to your large intestine. तो large intestine किधर है? आप अपना टॉर्सो लोगे, उसमें 3 इक्वल पार्ट्स करोगे, नीचे वाला पार्ट ऐसे ही होता है ना, पेट में नीचे होता है हमारे इंटेस्टाइन्स, नीचे वाला पार्ट इंटेस्टाइन्स हो गया आपका। यहाँ पे आप पूरे एरिया पे ऐसे थम से आप प्रेशर दो, ठीक है? आप पर डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान रखना, आपको इस बीच की तरफ आना है, बिकॉज इंटेस्टाइन कहाँ पे खत्म, कहाँ पे होता है, लेग्स के बीच में होता है, राइट? तो आप प्रेशर ऐसे देना शुरू करना और खत्म करना उसको बिटवीन योर फिंगर्स, सेम वे हियर। ओके, यू एंड हियर, बाकी पूरे में प्रेशर देते देते एंड हियर। ओके, बाकी इफ यू गाइस हैव एनी इश्यूज, the chat on the WhatsApp is open for 3 days. Keep asking questions there. Okay. For nervous weakness, Aruna, this will not be covered because वो systems में आ जाता है, nervous system अलग से होता है advanced acupressure में. Today we are not doing this. Having said that, nervous system आपका है brain और आपका spine, ठीक है? आपको उसके कोई भी issues लगते हैं, आप अपना brain stimulate करो, जैसे मैंने बताया था hook बना के, brain stimulate करो, spine stimulate करो, ठीक है? Start doing that. So we have covered our hands. Pura plotting, pura correspondence we have seen, front, back, torso, organs, everything we have covered. Okay. I am not covering the foot. Why? Because बहुत same work करता है. I cannot show you the foot now, but I will briefly explain. ठीक है? Same चीज जैसे आपने क्या किया था, hand को उल्टा रखा था ऐसे, जो भी light side है becomes the front of your body. The dark side of the hand becomes the back of the body. Same with foot. Foot को आप ऐसे रखेंगे कि fingers उसके नीचे होंगे, ठीक है? ऐसे visualize करेंगे. The light side of the foot, जो foot का sole होता है, right? That is the lighter shade of the foot. That becomes the front of your body. तो front में हमने क्या क्या देखा? हमारा torso पूरा आ जाता है. Chest area, abdomen, lower abdomen. वही, that is exactly what it's showing. Okay? Your fingers, जैसे हमने ये 5 fingers के लिए plotting देखी, क्या देखी? जो main thumb जो होता है, that is always your head and neck. Foot के लिए thumb क्या है? The big toe, right? तो यहाँ पे foot में आपका head और neck big toe बन जाएगा. Can you see it here? Okay? हमने ये भी देखा कि middle to जो भी बचता है, इस जो मेन फिंगर है, थंब है, उसके बाद जो 4 फिंगर्स बचते हैं, उसमें outer 2 are your hands because they can extend, they can move. Outer 2 will always be your hands, middle 2 will always be your legs. इसमें भी ऐसे ही होगा फुट में. बिग टो के बाद the 4 fingers that you are left with, the 4 toes that you are left with, outer ones, which is the second and the pinky toe, will be your hands. The middle two, which is your third toe and your fourth toe, are your feet. Okay. Front side is the sole of the foot is the front side of the body. Back is the top, जो आपको दिखता है, जो हम ऊपर normally देखते हैं, that is actually the back of the body. Okay. अभी हमने देखा बैक साइड पे हमारा स्पाइन होता है और साइड में 2 किडनीज रहते हैं. Spine, where is the spine located? It goes from between our legs, correct? Upwards it goes. Same. यहाँ पे legs कौन से हैं? Third and the fourth toe. तो उनके बीच में से your spine will start from the middle. Okay, it starts from the bottom, it goes up. तो यहाँ पे which is connected to the fingers here is the lower back. All issues of the lower back आप यहाँ पे treat करोगे. All issues of the upper back आप यहाँ पे foot के middle में आप treat करोगे. All issues of the upper back आप यहाँ पे treat करोगे. ठीक है? If you are getting any frozen shoulder, जैसे हमने shoulder joint के देखे, कहाँ पे आप treat करोगे? Hands कहाँ है हमारे? Second toe and pinky toe.
उनके जो जॉइंट कनेक्टेड टू द फुट है वो आपका शोल्डर जॉइंट हुआ, सो दिस इज वेयर यू विल ट्रीट। नी जॉइंट करना है आपको, थर्ड और फोर्थ टो का मिडिल जॉइंट, वो आपका नी जॉइंट है। कैसे आप प्रेस करोगे? हुक बना के ट्विस्ट, हुक ट्विस्ट, कीपिंग अ गैप ऑफ 1 सेकेंड, हुक ट्विस्ट, हुक ट्विस्ट। ओके, अगर ये आपको जो ऊपर से फुट दिख रहा है, इफ दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बैक ऑफ योर बॉडी, तो सर्वाइकल रीजन क्या होगा? बिग टो में नेल के नीचे काइंड ऑफ जो है जॉइंट के बाद इज योर सर्वाइकल रीजन। तो जिनको सर्वाइकल का पेन होता है, आप प्लीज चारों एरिया पे प्रेशर देके दो, ठीक है? प्रेशर ऐसे थंब से, ठीक है, ऐसे दो एंड अपने बिग टो पे भी ऊपर दो, नेल के नीचे। टेल मी हाउ यू फील, टेल मी इफ यू फील रिलैक्स्ड। अगर अभी हो रहा है तो अभी ही ट्राई करके देखो एंड लीव अ कमेंट इन द चैट बॉक्स। ओके, जिनको लोअर बैक का पेन हो रहा है, सब जगह आप भी प्रेशर दो, फुट में भी दो, हैंड में भी दो, ठीक है? नाउ दिस वाज योर राइट फुट। सेम वे आपका लेफ्ट फुट में भी हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने राइट फुट में लिम्स, हमने लिम्स और हेड को, वी हैव प्लॉटेड द लिम्स एंड हेड राइट फुट पे। सेम वे फॉर द लेफ्ट फुट, बट ऑपोजिट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? जस्ट लाइक वी डिड फॉर हैंड्स। आपको नहीं याद रहता, रेफर टू द नोट्स हियर, दिस पीडीएफ विल बी विद यू। जो आपको फुट, जो बिग टो है उसका टॉप, which is what you can see, nail वाला एरिया becomes your cervical, bottom becomes your face। तो जिनको भी जैसे if you can't apply pressure यहाँ पे, या फिर आपको अभी मैं आपको सीड थेरेपी बताऊंगी, if you can't apply a seed here, आप फुट में लगा लो सीड। आपको लगता है ड्राई आईज हो रहे हैं पूरे दिन में, आई सिट इन द ऑफिस बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ एयर, आई गेट ड्राई आईज। फुट में कॉरेस्पॉन्डेंस पे जैसे हमने आईज प्लॉट किए थे अपने थंब पे, वैसे ही बिग टो पे आप आईज प्लॉट करो, वहां पे प्रेशर देके आप सीड, आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई सीड्स, सीड लगा लो, यू विल फील अ डिफरेंस। ओके, थायराइड के लिए जिसको करना है 4 टाइम्स प्रेशर, 4 टाइम्स ट्रीटमेंट हो जाएगा, राइट? यू आर अप्लाइंग प्रेशर हियर ऑल्सो, एंड जो आपका बिग टो है उसमें नीचे की साइड पे अप्लाई प्रेशर देयर ऑल्सो। So 4 times, you're increasing the effectiveness by 4 times. Okay. All the areas, all the issues that we have discussed, sab kuch can be plotted on the foot as well. Now, organs wise देखें, same चीज करेंगे, because organs are on the front. कैसे करते हैं हम? हमेशा ऐसे रखते हैं, लिम्स, फिंगर्स नीचे आए हमारे, यहाँ पे भी हमने फुट में ऐसे किया है, फिंगर्स नीचे को फेस करेंगे, ठीक है? 1/3 प्लॉटिंग करेंगे, 1/3 डिविजन, 1/3 यहाँ पे भी कर दिया। जो हील वाला एरिया आपके फुट का विल बी योर लंग्स एंड हार्ट। तो लंग्स एंड हार्ट के इश्यूज, एस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, बीपी, बीट, आर्टरीज के इश्यूज, दिस इज वेयर यू प्लॉट। फुट में हील वाला एरिया सारा आपका। मिडिल एरिया जो है, जो सेकेंड वाला एरिया, 2/3 ऑफ द एरिया बिकम योर एब्डोमेन। तो पीपल who said indigestion issues, acidity, everybody will treat there. Okay, diabetes, this is where you treat the mid of the foot. Towards the fingers you get your lower abdomen, which is your intestines. So again, digestion issues, everybody who's facing digestion issues, constipation, diarrhea, malabsorption, you will treat in the जहाँ पे balls of the foot जिसको बोलते हैं, right? You will treat in this area. Between your third and fourth toe you have this region, which becomes your excretion and reproductive system wala area. So as we said, any stones of the which are stuck in the ureters, any infection of the any of the urinary tract canal, any issues, even PCOD, right? You get cyst in the ovaries. This is where you apply the pressure, right? In between your third and the fourth toe. Correct? So again, people who are having PCOD, you can apply pressure in 4 areas now. Correct? Hands maybe you've seen in between the feet, hands mein, and again foot mein
थर्ड एंड फोर्थ टो के बीच में, आप यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। somebody said for piles and hemorrhoids, यहाँ पे हमने देखा था this is the back, right? तो बिल्कुल जो थर्ड और फोर्थ टो में जो the join, right, where they are joining, that area becomes your rectum and anus. आप वहां पे प्रेशर दीजिए। Okay, now we have covered most of what we had to cover today. Mapping or correspondence, which I kept saying, this is what was correspondence. Let's just take a break of 1 minute. I will drink some water, come back and tend to your questions. Okay. Meanwhile, just revise this, think about it, and keep asking your questions in the chat box. Okay. So Sony asked me, is it safe to press the pituitary gland? Yes, Sony, absolutely. Don't people, हम लोग को बिंदी लगाया जाता है, राइट? हिंदू रिलीजन में बिंदी लगाया जाता है प्रेशर से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी बॉडी का। यहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्रा भी होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बट बहुत डीपली नहीं करना है इसको, ठीक है। वेरी लाइट प्रेशर यू कैन अप्लाई हियर। ओके, डू यू बिलीव वन साइड ऑफ द बॉडी कैन बी वीकर देन द अदर? एब्सोल्युटली यस, यस इट कैन बी, एंड इट इज, often times it is. Okay, if the big toe is cracked, what does it mean? What does acupressure tell about this? I am not sure, Purnima. Like the history and other systems of your body will need to be diagnosed for me to tell you this. But agar aapko cracking, I believe big toe cracking would be like sole of the foot, wahan pe aapko cracking lag raha hai agar, to आप correspondence पे cream, you're of course applying cream on your foot, आप correspondence area पे भी cream लगाओ, ठीक है। Varicose veins, Rohini has asked. Rohini, again, varicose veins में basic वाला, like there's advanced form of acupressure that works for varicose veins very brilliantly, but आपको जैसे usually varicose veins कहाँ, thighs and यहाँ पे calf area में रहता है, right? I've already told you correspondence उनका, ये आपका थाई एरिया है दोनों लेग्स का, दिस इज योर काफ एंड शिन एरिया। आप इसको लाइट प्रेशर दोगे। वेरिकोज वेन्स में प्रेशर हार्ड नहीं देना है, लाइट प्रेशर आप दो रोज। व्हाट हैपेंस इज वेरिकोज वेन्स में ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, सो आप उसको धीरे धीरे प्रेशर दीजिए, इट विल इंप्रूव ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया। ओके, आई एम ऑल्सो कवरिंग, आफ्टर कवरिंग दीज क्वेश्चंस आई विल कवर सीड थेरेपी, तो आप यहाँ पे इस एरिया में सीड्स भी लगाइएगा। ओके, वर्टिगो, अगेन फॉर वर्टिगो क्यों होता है? क्योंकि आई में जो सॉरी ईयर्स में हमारा जो फ्लूइड होता है वो जब मूव करता है और अगर सही से वो बैलेंस नहीं दे रहा है तो वर्टिगो होता है। तो मीनियर डिजीज, वर्टिगो, ये सब आपको ट्रीट करना है तो आप अपने ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस पे दीजिए। ओके, वर्टिगो ऑफन बिकम्स अ क्रॉनिक इशू, तो आप इसको चारों जगह पे करो। ओके, बोथ थम्स एंड बोथ टोस, सीड जरूर लगाना, सीड विल जस्ट कवर आफ्टर अ व्हाइल। For teenagers as they are evolving in hormones, टीनेजर्स के लिए बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं हॉर्मोन्स की वजह से, एंड हार्मोन इम्बैलेंस होता ही है ड्यूरिंग टीनेज इयर्स, राइट? तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते रहिए धीरे धीरे धीरे, एंड
बाकी जो issues arising from that can be dealt with, but the puberty period is a period where your hormones will be in balance. Okay. Nodules on the thyroid gland and breast. Again, nodules and fibroids वगैरह का बहुत अच्छा treatment होता है advanced acupressure में. But for now, I will tell you, thyroid gland में ये आपका thyroid gland है, ठीक है? आप यहाँ पे pressure तो देंगे. Breast आपका कहाँ आ जाएगा? Lungs के आगे ही होता है हमारे, है ना? तो आप lungs area में भी हल्का pressure दीजिए. Okay, I will again seeds आप लगाओगे, वो रात भर लगा के रखना है. I'll cover that. Try that. ठीक है. Pigmentation पूर्णिमा, आप pigmentation again इसी एरिया पे करो आप. ठीक है. Pigmentation के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एडवांस एक्यूप्रेशर में होता है. आप लोग चेक कर सकते हो if you any of you is interested. Dr. Wall. Okay, I'm writing it here. If you get, you should be able to get the videos. डॉक्टर वॉल की मेरिडियंस होते हैं, थोड़ा एडवांस्ड है, बट किसी को अगर शौक है एक्यूप्रेशर सीखने का, जानने का, डॉक्टर वॉल के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं एक्यूप्रेशर में फॉर नोड्यूल्स, फाइब्रॉइड्स, पिगमेंटेशन, स्किन इश्यूज, एलर्जीज, बहुत अच्छे हैं ट्रीटमेंट्स. हाउ मेनी पल्सेस वी हैव टू गिव एंड व्हाट इंटरवल्स. सो मीना कुमारी, अबाउट 3 पल्सेस. ठीक है, आप ट्विस्ट करो तो भी 1 2 3, जरा सा गैप, 1 2 3. ठीक है, अगर आप सिंगल एरिया पे प्रेस करो, मान लो आप आईज पे करो, 1 2 3, लीव इट फॉर लाइक 1.1 सेकेंड्स के लिए छोड़ दो, 1 2 3. ओके, प्रेशर मीडियम ही रहेगा, लाइट टू मीडियम ही प्रेशर रखना है. आपको पता लगना चाहिए पर दर्द नहीं होना चाहिए. ओके. फॉर एलोपेशिया एंड डायबिटीज, शिप्रा, एलोपेशिया हैज उसका रूट कॉज बहुत अलग आ जाता है एलोपेशिया का, बट जो मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस बताया आप उस पर ट्राई कर सकते हो. एलोपेशिया का प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होता है, उसका प्रॉब्लम दूसरा है, बट आप ये ट्राई कर सकते हो. along with that, actually let me share the screen again. I have mentioned these common pairings. Okay, ये पेयरिंग का क्या मतलब है? हमारे हर सेंस ऑर्गन का एक कंट्रोलर होता है. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, माउथ. ठीक, इनका सेंस ऑर्गन हमारे मेजर ऑर्गन्स में है. तो जब भी आप आईज का ट्रीटमेंट दोगे, आप लिवर, जो हमने लिवर का कॉरेस्पॉन्डेंस दिया था ना, वहां पे भी ट्रीट करो. ठीक है, जिसको भी वीक आई साइट, आईज ड्राइनेस, आईज में स्टाई हो गया, आईज में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लिवर को भी प्रेस करना है. नोज के इश्यूज, स्नीजिंग, साइनसाइटिस, सब कुछ आप लंग्स को भी दोगे, यहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट दीजिए. ओके, सो व्हेनेवर यू आर पुटिंग ट्रीटमेंट्स ऑन दीज, आपको साथ में इन ऑर्गन्स को भी करना है ट्रीट. ईयर्स का किडनी, ईयर्स का आप देखोगे बहुत इतना सुंदर चीज है हमारी बॉडी में, हमारे ईयर्स में आप देखोगे कि किडनी जैसे ही लगते हैं, राइट? दे आर शेप्ड लाइक दिस, एग्जैक्टली एज आवर किडनीज आर. तो वैसे ध्यान रखना आप, ईयर्स आर रिलेटेड टू आवर किडनी. तो ईयर का जब भी आप डेफनेस का, किसी ने मेरे को वर्टिगो का पूछा था, मीनियर डिजीज का है, आप किडनी को भी साथ में पॉइंट्स को प्रेस कीजिए. ठीक है, पहले आप ईयर्स को कर लीजिए, फिर किडनी को कर लीजिए, फिर ईयर्स को, ऐसे ऑल्टरनेट करो. ओके. टंग, टंग का हार्ट है. अगर टंग पे आपको लगता है बहुत रेडनेस हो रहा है, अल्सर्स हो रहे हैं, तो आप हार्ट को भी करोगे प्रेस. माउथ, माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं, ड्राई माउथ हो रहा है, बैड ब्रेथ हो रहा है, टीथ में पेन हो रहा है, कुछ भी टंग के अलावा, ऑल प्लेसेस अराउंड द माउथ एक्सेप्ट द टंग इज योर स्टमक. ठीक है, कहते हैं ना स्टमक में हीट बढ़ती है तभी माउथ से बैड ब्रेथ आता है, माउथ में अल्सर्स आते हैं, तो माउथ इज रिलेटेड टू योर स्टमक. बोन्स आपके किडनी से हैं, तो जिनको भी जैसे बोन को हील करना है या बोन्स में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप किडनी को भी ट्रीट करोगे. ओके, यहाँ पे मसल्स में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप लिवर को, तो जिनके मसल में पेन रहता है, लिगामेंट टीयर्स हैं, ये भी मसल, लिगामेंट्स, टेंडन्स आर ऑल कंट्रोल्ड बाय योर लिवर, तो आप लिवर को साथ में देना. किसी ने मुझसे अभी एलोपेशिया पूछा था, which is how I came to this. Hair is connected to both your liver and kidney. Okay, तो एलोपेशिया लिवर और किडनी के एनर्जी इंबैलेंस से होता है, तो आप यहाँ पे तो दोगे ही ट्रीटमेंट, बट आप लिवर और अपनी दोनों किडनीज की एनर्जी को भी बैलेंस करो. ओके, एंड हार्मोनल इश्यूज के लिए, जैसे आपको पीसीओडी मैंने बताया, तो आप इस कॉरेस्पॉन्डेंस पे तो करोगे ही,
पिट्यूटरी ग्लैंड को भी बैलेंस करो। थायराइड हो रहा है यहाँ पे तो करोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी करो। ओके, सो कीप दीज इन माइंड। For osteoporosis, Purnima, again same correspondence as I said, and with that kidney you have to do. Okay, kidney is the controller and वो कैल्शियम बनाना ये सब किडनी करता है, ठीक है, कैल्शियम का देखना बॉडी में। For how long pressure to be given, मीना, I have said 2-3 times, 3 से 4 बार आप प्रेस करोगे फिर रिलीज करोगे। Okay, I think I'm reading old messages, I guess. Can a person with high BP do it? Yes, Sheetal, people with high BP can do this. High pulse rate, where to press? Okay, where to press? Again, high BP, see, high BP is a symptom, okay? It is not the root cause. तो high BP आपका आर्टरीज में क्लॉगिंग हो गया है, इस वजह से भी हो सकता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, इस वजह से भी हो सकता है। तो अगेन हाई बीपी is not like we won't be able to cover high BP in this workshop, but in general आपको हार्ट का इशू बताया, राइट? हाई बीपी क्या, हार्ट में प्रॉब्लम है ना, तो आप यहाँ पे दबा दो। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस कहाँ से होता है? किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो स्ट्रेस हमारा देखते हैं, तो आप ये भी प्रेस कर दो, ठीक है। बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, अरुणा, लिवर, लिवर आप प्रेस करो, ओके। ऑटो इम्यून, सूजा, ऑटो इम्यून इज अ वेरी एडवांस्ड फॉर्म, जो इसमें तो बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है। ऑटो इम्यून इस कॉरेस्पॉन्डेंस से आप कर नहीं पाओगे, बट एक्यूप्रेशर कैन हेल्प विद, मतलब एडवांस लेवल्स ऑफ एक्यूप्रेशर हेल्प्स विद ऑटो इम्यून आल्सो, ओके। डायबिटीज का शिप्रा आपने पूछा था, एलोपेशिया एंड डायबिटीज। डायबिटीज एज आई सेड अगर ऑटो इम्यून नहीं है, ओके, टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें आपको इंसुलिन शॉट्स एक्सटर्नली लेने पड़ रहे हैं, उसके लिए आप ये वाला जो एरिया था, या फिर सिंपली खाने से पहले आप ऐसे मिडल ऑफ द पाम में प्रेस करोगे, डायबिटीज में इट विल हेल्प यू। Just give me a minute. Acupressure points on the face, Purnima, we are not doing that. Today we did only Sujok, so not on the face, on just hands and feet. To reduce belly fat, Rohini, again, belly fat के बहुत causes हो सकते हैं, okay? Cortisol is one of the issues. Belly fat आपका जब बहुत स्ट्रेस होता है उससे जरूर बनता है, belly fat ही बनता है, तो आप एक तो किडनीज को करो, ठीक है, ऊपर से बेली फैट के एरिया को भी आप मतलब बेली के एरिया को भी आप स्टिमुलेट करो। तो अगर लोअर बेली फैट है आपका, ये वाला एरिया आप स्टिमुलेट करो, अपर है ये वाला करो। जिनको हिप्स में भी अगर अक्यूमुलेशन ऑफ फैट है, तो ये नकल्स आपके हिप्स हैं, राइट, लेग्स के ऊपर ये जो नकल्स हैं ये हिप्स हैं, तो आप वो वाला एरिया भी स्टिमुलेट करो, ओके। अरुणा, फॉर कामिंग माइंड आप पूरा ये जो हेड वाला एरिया है वो प्रेस करो आप, बिकॉज नॉट जस्ट हमने हेड का कॉरेस्पॉन्डेंस, बट यहाँ पे आपके नर्व्स हैं, आपके कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कई सारे पॉइंट्स हैं जो माइंड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो करो आप। प्रेशर पॉइंट्स फॉर टेनाइटिस है ना, यही आपके ईयर्स, ठीक है, ईयर्स को आप प्रेस करो साइड ऑफ थम्स में, मतलब और ऑलमोस्ट नेल के साइड में आ जाता है वो, यहाँ पे प्रेस करो। ईयर्स का कंट्रोलर एज आई सेड किडनी है, राइट, सी दिस, ये ईयर्स का कंट्रोलर हमारा किडनी है, तो आप किडनी को भी साथ में प्रेस करोगे, ठीक है, ओके। I'll take questions, more questions a little bit later. I will quickly cover seed therapy. तो अभी तक what we have covered is how, where the correspondence is, where to find the organs, and how to apply pressure, where to apply pressure. अभी आप पूरे दिन तो प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते, राइट, तो आप क्या करोगे, you use something called a seed therapy. तो आप सबसे पहले जिस भी एरिया में, लेट्स से हैना का क्वेश्चन था टेनाइटिस, आपको टेनाइटिस है, आप इस एरिया को पहले प्रेस करोगे, कैसे, जो अभी बताया, 3 to 4 पल्सेस विद अ लिटिल गैप, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप, करीब करीब ये किया आपने। अब क्या है, ये एरिया एक्टिवेट हो गया, अब यहाँ पे एनर्जी फ्लो हुआ है,
अब आप क्या करोगे, सीड्स यूज करोगे। कौन से सीड्स? कॉमन सीड्स विच आर फाउंड इन योर पैंट्री ओनली, ओके, नथिंग फैंसी। आप ये देखोगे जनरल के लिए फेन्यूग्रीक सीड्स, फेन्यूग्रीक मीनिंग मेथी, मेथी दाना, ड्राई मेथी, मतलब मेथी का दाना जो होता है ना, ये होता है, दिस इज मेथी दाना, करेक्ट। यही मेथी दाना आपको यूज करना है फॉर ऑल काइंड ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट दीज 3, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, इन तीनों के अलावा आपको जब भी यूज करना है मेथी दाना ही यूज करना है। कैसे यूज करना है? आप यस मीना कुमारी, मैथ स्टिक, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। एक्चुअली मैं कर ही लेती हूँ। जो हमने एक प्रेशर देने का तरीका देखा था, राइट, विद आवर हैंड्स, बट जब एरिया बहुत स्मॉल होता है, जैसे आईज, फेस के एरियाज के लिए स्पेशली, ठीक है, आईज, नोज, माउथ, बहुत छोटा एरिया है, हैंड्स, हमारे फिंगर्स उतना टारगेटेड पॉइंट पे नहीं कर पाएंगे प्रेशर, तो एक एक्यूप्रेशरिस्ट जो होता है वो तो ये चीज यूज करते हैं, इसे जिमी बोलते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं हम लोग। बट आप लोग को जिमी तो नहीं होगा आपके पास, तो आप ये मैच स्टिक यूज करेंगे, राइट, नॉर्मल जो माचिस होता है उसका कौन सा एंड यूज करोगे आप? ये वाला, नॉट दिस एंड जिससे आप जलाते हो, वो नहीं यूज करोगे आप, दूसरा एंड यूज करोगे। एंश्योर कि इस पे स्प्लिंटर या कुछ नहीं निकला हो, इट इज सॉफ्ट ओनली। तो जब आपको टारगेटेड ट्रीटमेंट, जैसे टेनाइटिस का पूछा था, ईयर का एरिया बहुत छोटा है, करेक्ट, तो आप यहाँ पे मैच स्टिक से प्रेशर दे सकते हो। देना वैसे ही है, 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप, ठीक है। आज का ट्रीटमेंट देना है सेम, जो भी छोटा एरिया है उसके लिए आप इससे ट्रीटमेंट दोगे। अभी स्पाइन, स्पाइन का आप इससे नहीं दोगे, आप करके देखना, आपको बहुत पेन मिलेगा, ये मतलब ये पेन करता है, राइट। तो छोटे एरिया के लिए इट इज ओके, बट नॉट फॉर बिगर एरिया, सो मोस्टली फॉर फेस यू कैन यूज मैचस्टिक ऑल्सो, ओके। Yes, coming back to seed therapy, after you have applied the pressure, you will apply seeds. कैसे use करना है? You need first a tape. This is a paper tape. This is not the transparent tape that we use for stationery. ये paper tape होता है, बना ये पेपर से होता है, नॉट मास्किंग टेप ऑल्सो, पेपर टेप अलग होता है, ठीक है। ये आपको मेडिकल शॉप्स में मिल जाएगा, ये हाथ से ऐसे कट जाता है और ये पेपर मटेरियल होता है इसका, ये it is thin enough to stick to your hands, okay, without coming off, without irritating the skin. तो आप टेप लोगे। अभी जैसे आपको ईयर्स का ट्रीटमेंट करना है, एक हाथ का मैं बता रही हूँ, आप एक मेथी दाना लोगे, इस तरीके से आप चिपका दोगे उसको, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रेशर दिया, इस टेप को मैंने ऐसे लगाया कि इस जिस पॉइंट पे प्रेशर दिया था वहीं पे मेथी दाना स्टिक हो, ओके। अब क्योंकि दोनों साइड पे लगाना है ईयर पे, तो मैं देख लूंगी कितना दूरी पे आ रहा है, करीब करीब till what point do I have to stick this so that it covers the other area also, okay, let's say करीब करीब थोड़ा दूर आ रहा है, I have taken less tape, ऐसे करके आप टेप को स्टिक कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपके ईयर के लिए। सिमिलरली आईज के लिए भी ऐसे होगा, आप स्पेसिंग देख के अपने हाथ पे प्रेशर दे के पेपर टेप पे आप 2 मेथी के दाने लगाओगे और चिपका दोगे, नोज करना है तो भी, माउथ करना है तो भी, ठीक है। अब अगर बड़ा एरिया है, जैसे अभी आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था कि वेरिकोज वेन्स के लिए, जैसे मैंने उन्हें बोला था, अभी वेरिकोज वेन्स मान लो आपके थाइज और काफ एरिया में आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा एरिया है। अब इस पूरे एरिया को तो आप 2-4 दानों में नहीं कवर करोगे, तो आप एक मेथी की पट्टी बनाओगे, ठीक है। मेथी की पट्टी, आई विल सेंड यू अ वीडियो ऑफ हाउ टू डू इट, मैं आपको क्विकली शो कर देती हूँ। आप क्या करोगे, एक फ्लैट सरफेस पे आपके टेबल या किसी भी बुक पे आप कुछ ऐसे मेथी फैला लेना, ठीक है, और उसको एक स्ट्रेट लाइन में रख के आप अपना पेपर टेप उसके ऊपर ऐसे रख देना, ठीक है। सारे मेथी के सीड्स विल स्टिक टू इट,
दिस इज कॉल्ड अ मेथी पट्टी। ओके, पूरा स्ट्रिप बन गया है मेथी के दानों का। तो जो भी आपका बड़ा एरिया है, जैसे आपको इस एरिया में लगाना है, आप ये मेथी की पट्टी लगाओगे। अब मेरा पेपर टेप जो है, इट इज नॉट इनफ टू कवर दिस होल एरिया। इसके एक डबल साइज का भी टेप आता है। ओके, यू विल यूज दैट टेप। आप वो नहीं ले रहे हो, यू आर बाइंग ओनली वन, तो इसी को 2 बार लगा लो। ओके, टेक 2 स्ट्रिप्स, बट कवर बैक से फ्रंट पूरा होना चाहिए। ओके, नॉट जस्ट इन द फ्रंट, पूरा बैक से फ्रंट, क्योंकि वेरिकोज वेन्स दिख रहे हैं। अभी मान लो किसी को हील पेन का किसी ने पूछा था, अब हील आपका यहीं पे तो है ना, हील तो सिर्फ यही एरिया है, तो आप सिर्फ इतने आगे ही आगे लगाओगे। ठीक है, बट you have to use more fenugreek seeds for this. You have to make a putty out of it and use it. Okay, हिप पेन के लिए भी शीतल आप ऐसे यही पतली पट्टी यूज होती है उसके लिए। ये आपका हिप जॉइंट है, एक लंबी पट्टी, आई शो यू हाउ टू मेक इट। आप करीब करीब इतनी लंबी पट्टी लोगे, सीड्स को आप फैला लोगे एक कोई भी फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, उनको स्ट्रेट करके दिस बिकम्स योर लॉन्ग मेथी पट्टी फॉर जॉइंट्स। ओके, आपने हुक की तरह से बना के आपने ये एरिया को ट्विस्ट एंड टर्न किया था। मैंने बोला जॉइंट्स के लिए आप टू ट्विस्ट एंड रिलीज, आपने प्रेशर दिया, इस मेथी पट्टी को आप हिप जॉइंट पे लगा लोगे। ठीक है, इस तरीके से। अभी ये मैं आपको लेफ्ट हैंड दिखा रही हूँ, मैंने जैसा बताया था सेंटर लाइन, उसके लेफ्ट में सब लेफ्ट, तो ये मेरा लेफ्ट हिप है। ओके, आपको अगर राइट हिप में हो रहा है यहाँ करो, दोनों में हो रहा है दोनों में करो। थैंक यू रोहिणी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, इस तरीके से आप मेथी पट्टी, अब आप मेथी पट्टी को बना लिया आपने, लगा लिया। लगाओगे कब? रात को। ठीक है, क्यों रात को? बिकॉज पेपर टेप है और मेथी है। द मोमेंट यू वॉश योर हैंड्स, दिस विल कम ऑफ, पेपर टेप विल ऑल्सो कम ऑफ, मेथी सीड्स विल स्वेल अप। ओके, वी डोंट वांट दैट। तो जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, यू अप्लाई मेथी पट्टी। ओके, एंड मॉर्निंग में आप डिस्कार्ड कर दोगे। यू डोंट यूज द सीड्स, यू डोंट रीयूज द सीड्स और द टेप अगेन, दिस इज ओनली यूज्ड वन टाइम। आप इसको निकाल के अगली बार नहीं लगाओगे। यू डिस्कार्ड दिस ऑफ, एंड अगली नाइट को फिर से कितनी देर लगाना है? 4 to 6 hours। ठीक है, 4 to 8 hours भी हो जाए कोई नहीं, नॉट मोर देन दैट। शीतल, वाई मेथी सीड्स? फर्स्टली बिकॉज मेथी सीड्स के एजेस जो है पर रफ होते हैं, तो दे गिव यू गुड प्रेशर। आप जब लगाओगे उसके बाद भी आप प्रेशर देते रहना, देखना आप कितना अच्छा प्रेशर मिलता है मेथी सीड से। सेकेंडली, सीड्स क्योंकि दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दे हैव एन एनर्जी ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो दे हेल्प kind of balance and absorb the pain also. Okay, that's how you use methi. Now same चीज आप करोगे for 3 other, but वो 3 सिर्फ particularly ही यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे? वो जो व्हाइट मटरा होता है आपके छोले जैसा जो लगता है, वो यूज होगा स्पाइन में, क्योंकि स्पाइन वाले रीजन में आप मेथी दाने नहीं लगाओगे। फर्स्टली दे आर टू शार्प फॉर स्पाइन, एंड इट्स नॉट इनफ टू गिव प्रेशर। ओके, इसलिए आप स्पाइन के लिए व्हाइट मटरा यूज करोगे। Is somebody trying to speak? Okay, राइट, आप ऐसे ही एक लाइन में 6 to 8 मटरास लगाओगे और ऐसे ही स्टिक कर दोगे। आफ्टर गिविंग प्रेशर यू विल स्टिक इट, एंड 4 to 8 hours लगा के सुबह यू विल डिस्कार्ड इट। नो रीयूजिंग ऑफ सीड्स। ओके, आइस के लिए आप ब्लैक पेपर यूज करोगे। यू कैन यूज, डोंट यूज डोंट नहीं, बट आइस के लिए ब्लैक पेपर ज्यादा वर्क करता है। बिकॉज आपको अगर ध्यान भी होगा, हमारे मॉम्स कई बार हमें पाउडर बना के देती थी ना, जैसे एलमंड का, और उसमें ब्लैक पेपर होती थी आइस के दर्द के लिए। आइस के लिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है दाना, इट वर्क्स वेरी वेल। तो आइस के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ट्राई यूजिंग ब्लैक पेपर सीड। ओके, एंड किडनी के लिए यू विल यूज किडनी बीन, राजमा। राजमा जैसे ही दिखता है ना किडनी, तो किडनी के लिए आप राजमा यूज करोगे। ठीक है,
एक्सेप्ट दीज थ्री ऑल इश्यूज के लिए आप फेन्यूग्रीक यूज करोगे. शीतल, फॉर हेडेक एंड माइग्रेन कैन वी यूज पेपर? नो, पेपर सिर्फ यूज होगा आइस के लिए. अगर आपको हेडेक और माइग्रेन हो रहा है तो आप ऐसे ही मेथी लगा बना के पट्टी आप पूरे हेड रीजन को कवर कर लो ऐसे. ठीक है, उसमें आइस भी कवर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस तरीके से आप बनाओगे. ओके. Aren't they too big for white matra? Tape is too thin. Yes, my tape is too thin. आपकी इससे डबल साइज की टेप आती है. आई थिंक वो 1/2 इंच की है या कुछ है. आई डोंट रिमेम्बर द डायमेंशंस. इससे जस्ट डबल होती है. वो आपको यूज करना पड़ता है बिकॉज मटरा के बाहर भी आपके पास स्पेस होना चाहिए फॉर द टेप टू स्टिक. ओके, सो यू हैव टू टेक अ थिकर टेप. ओके, जस्ट लाइक आई सेड, फॉर जॉइंट्स एंड स्पाइन आपको फेन्यूग्रीक सीड या फिर मटरा लेना है. जॉइंट्स के लिए फेन्यूग्रीक सीड्स, स्पाइन के लिए मटरा, स्ट्रेट लाइन में. अदर एरियाज के लिए जैसे आपका आइज या किडनी, आपको ब्लैक पेपर या किडनी बीन लेना है. उसको लगाओगे और रात को छोड़ दोगे. दिन में मत लगाना बिकॉज यू वॉश योर हैंड्स, यू यूज इट फॉर अदर पर्पसेस. तो दिन में वो रिमूव हो जाता है. इट्स नॉट कन्वीनियंट. ओके, वेयर टू यूज मेथी, ब्लैक पेपर एंड व्हाइट मटरा. ओके, व्हाइट मटरा इज पीस. यस, जो छोले कुलचे, चना कुलचा जैसे होता है ना, उसके साथ जो यूज होते हैं. दे आर व्हाइट इन कलर. दे आर स्मॉलर देन योर काबुली चना. वो. Okay. Black pepper is used in the same way like methi. Yes, 2 black pepper per thumb. You use two eyes के लिए 2 black peppers. वैसे ही आप जैसे इसमें दिखाया था, छोटे टेप पे आप 2 लगाओगे जितना आपका आइस का विड्थ है एंड यू स्टिक इट. ओके, मैं फिर से ये रिपीट कर देती हूँ. स्पाइन का अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, स्पाइन मीनिंग आपका कोई भी लोअर बैक इश्यूज, अपर बैक स्पाइन, स्लिप डिस्क, इवन सायाटिका, आप उसके लिए व्हाइट मटरा यूज करोगे. आइस के लिए स्पेसिफिकली आप ब्लैक पेपर यूज करोगे. 2 ब्लैक पेपर्स ऑन 1 टेप बिकॉज 2 आइस पे लगा रहे हो आप. अगर आप एक थंब पे करोगे तो 2 ब्लैक पेपर ऑन अ टेप, दूसरे थंब पे करोगे तो भी 2. फुट पे आई विल नॉट रेकमेंड क्योंकि ब्लैक पेपर जब आप लगाओगे, लगा सकते हो, जब आप उतरोगे आपको ध्यान नहीं रहेगा, वो दर्द करता है बहुत तेज. फेन्यूग्रीक नहीं करता है, ब्लैक पेपर करता है, बड़ा होता है क्योंकि वो. ठीक है, तो क्योंकि वो बॉटम ऑफ द फुट पे लगता है, अगर आप आई के लिए कर रहे हो तो वो मत लगाना. ठीक है, ओनली ऑन योर थंब. अगर आपको लगाना है फुट पे तो आप फेन्यूग्रीक ही लगाओ फिर आइस के लिए भी. किडनी के लिए किडनी बीन. किडनी अपनी राजमा जैसी दिखती है ना, या राजमा अपना किडनी जैसा दिखता है, तो किडनी के लिए राजमा लगाओगे आप. ठीक है, और जनरली बाकी सब चीजों में आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा, फेन्यूग्रीक लगाओगे. सिंपल. राजमा एंड व्हाइट मटरा के 1 सीड नो. जितना आपको, जितनी चीजों का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, अभी आप मटरा आप पूरी स्पाइन करते हो ना, तो ये पूरे एरिया कवर करने के लिए कितना चाहिए होगा आपको? करीब 6 से 8 चाहिए होंगे, तो आप 6 से 8 लगाओगे. आपको राजमा, अब आपकी 2 किडनी, आप एक किडनी पे तो नहीं ट्रीट करोगे ना, दोनों करोगे, तो दोनों किडनी 2 राजमा लगेगा पर हैंड. ठीक है, जितना भी आप ट्रीट कर रहे हो. अभी ज्वाइंट कर रहे हो तो ज्वाइंट तो पूरा ही है ना, उसमें कोई नंबर तो नहीं है, तो आप ज्वाइंट के लिए पूरा जितना इनफ है टू कवर द होल एरिया आप उतना लोगे. फॉर थायराइड फेन्यूग्रीक सीड्स, यस मीना कुमारी, ये पूरे एरिया के लिए एक चौड़ी पट्टी आपको लेनी होगी. उस पे ऐसे ही जैसे मैंने ये एक लंबी सी पट्टी लेके ये लगाया ना, वैसे आप लगाओगे और प्रेशर देने के बाद पूरे इसको कवर करोगे. ओके, any more questions? Any questions are welcome. We are done with the presentation, we are done with the correspondence. What if we cover the entire palm in fenugreek? No, Purnima, don't do that. Don't do that. Give pressure to the entire palm, but don't cover your entire palm in fenugreek seeds. I hope this was a joke. For hypothyroid, same point. Yes. All kinds of thyroid issues. ठीक है, यहाँ पे करना है आपको. साथ में मीना कुमारी ध्यान रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा TSH हार्मोन सिक्रीट करता है, तो थायराइड के ट्रीटमेंट के साथ आपको पिट्यूटरी भी करना है स्टिमुलेट.
सीड इज अ मस्ट? नो, इट्स नॉट अ मस्ट, बट आप प्रेशर पूरे दिन तो नहीं दे पाओगे ना, देना भी नहीं चाहिए आपको, करेक्ट? तो प्रेशर देने के बाद, फॉर एग्जाम्पल रात को आपने 1 या 2 मिनट्स के लिए प्रेस दैट पॉइंट, बट उसके बाद वी वांट द बॉडी टू आल्सो हील. एक बार आपने प्रेशर दे दिया, बट उसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होएगा? बाय अप्लाइंग सीड्स. Acupressurists use something called a magnet also, not so. Acupressurists ऐसे magnets use करते हैं. I'll show you. सीड से भी पावरफुल ट्रीटमेंट होता है मैग्नेट्स का, बट आज मैग्नेट्स नहीं कवर हुए. ऐसे दिखते हैं मैग्नेट्स, ठीक है? 4 टाइप के मैग्नेट्स होते हैं हम लोग के पास. दिस इज इवन अ मोर पावरफुल ट्रीटमेंट. दिस इज एक येलो व्हाइट कलर का मैग्नेट होता है, एक ब्लैक कलर का मैग्नेट होता है. तो दिस इज व्हाट वी यूज. ओके, फॉर पेन इन फिंगर्स वेयर वी हैव टू गिव प्रेशर. अरुणा, आप मेरे को अभी तक आपने जो सीखा है, कैन यू आंसर दिस फॉर मी? फॉर पेन इन फिंगर्स वेयर विल यू गिव प्रेशर? Purnima, for treatment during day 10 minutes and overnight is good. Depends. आपको आपको तब तक प्रेशर देना है जब तक you don't feel a relief. साथ साथ में ही रिलीफ होने लगता है. ओके, टेम्पररी रिलीफ साथ साथ हो जाता है. परमानेंट रिलीफ के लिए यू हैव टू रिपीटेडली डू इट. तो ओवरनाइट तो करना ही है. अगर आप 1-2 हफ्ते से कुछ चल रहा है तो ओवरनाइट तो आपको सीट थेरेपी करनी ही है, ठीक है? ड्यूरिंग द डे ऑल्सो यू कैन डू इट, बट remember, keep a gap of 1 to 2 hours meal ke around. Okay, for chronic ones, Purnima, yes, overnight karna hai aapko. Okay, for chronic ones I have not covered because this session was for acute only, but chronic ke liye hum yahi seeds ye magnets use karte hain. Magnets are more powerful. Okay, तो ये यूज करेंगे. Sony for joint issues, jaw issues, sorry. यही आप अपना मैचस्टिक लो. कहाँ होता है आपका जॉ? यहाँ है ना. आपका ये जो लिप एरिया है, ये इससे लेके कानों तक ये आपका जॉ है, ठीक है? तो आप इसको प्रेशर दो. ओके, अच्छा, आप अब मेरे को ये बताओ सोनी कि जॉ में आपका क्या क्या होता है? ये तो आप प्रेशर दोगे कॉरेस्पॉन्डेंस के अलावा, बट व्हाट इज योर जॉ मेड ऑफ? करेक्ट. और टीथ होता है. ओके, के लिए आप कहाँ ट्रीटमेंट दोगे? जॉ तो आप यहाँ पे करोगे. बोन्स के लिए आप कहाँ ट्रीटमेंट दोगे? और विच ऑर्गन? ओके, बोन्स के लिए किडनी. ये हमने देखा था ना अभी यहाँ पे पेयरिंग में. बोन्स के लिए आपको किडनी पे भी ट्रीटमेंट देना है, तो आपके बोन स्ट्रेंथन होंगे. टीथ, टीथ किसके बने होते हैं? कैल्शियम के. बोन्स भी कैल्शियम की होती हैं, तो टीथ के लिए भी आप किडनी पे दोगे. नर्व्स, नर्व्स कौन देखता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइन देता है, तो उसको भी कर दो साथ में स्टिमुलेट. मसल्स, मसल्स भी तो होते हैं ना जॉ के पास. मसल्स के लिए लिवर को भी कर दो साथ में, ठीक है? इतना नहीं कर सकते हो तो मेन बोन और कॉरेस्पॉन्डेंस, इन दो को तो करो ही करो, ठीक है? Any 10-minute massage that we can do, some routine. Okay, thank you for asking that question also. I have prepared, आपको ग्रुप में मिल जाएगा. I have prepared a 10-minute routine for you guys to do every day. That covers a bit of advance. वो points बहुत अच्छे हैं. I call them VIP points. It extends beyond what we have covered. Okay, आप वो follow करना. It is a 10-minute routine. Every day follow करो आप pressure देने के लिए. उसमें seeds वगैरह नहीं है. It is for covering your whole body, letting the energy flow freely in your whole body. I will send you that PDF. Okay. अगर आपको उसमें कुछ questions होते हैं, ask me. What if we press tips of fingers? Yes, they are brilliant points, शीतल. टिप्स ऑफ फिंगर्स पे हमारे बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं. आप इनको जरूर प्रेस करो. आप
चलो मैं बता देती हूँ, आपके नेल के बेस में ना दोनों साइड पे भी जो मैं वीआईपी पॉइंट्स बोल रही थी वो यहाँ पे होते हैं, हर नेल के दोनों साइड पे, वो भी आप प्रेस करो। ओके, इफ आई मेक क्लोज फिस्ट एंड ओपन इज इट ओके, ऐसे ऐसे कर सकते हो। बट कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इंटेस्टाइन्स आपके यहाँ पे हैं ऊपर वाले एरिया में ना, तो आप थोड़ा डिफिकल्टी होगी, मेरे को हो रहा है थोड़ा डिफिकल्टी, बिकॉज फिंगर्स मिड तक तो पहुंच जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा पे उतना प्रेशर नहीं जा रहा है, बट यू कैन ट्राई, अदरवाइज दूसरे हैंड से तो कर ही सकते हो, है ना। अर्चना, पिगमेंटेशन ऑन चीक्स, वही आप इसको तो करो ही, आप इसी को करो, एडवांस में बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन और स्किन इश्यूज के लिए, बट आज वो नहीं कवर कर रही मैं। ऊपर में से किसी ने, अरुणा ने मुझसे पूछा था पेन इन फिंगर्स, आई आस्क्ड यू अरुणा, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है कोई नहीं, आपके आई एम अज्यूमिंग पेन इन फिंगर्स मींस हैंड्स की फिंगर्स में आपको पेन हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर क्यों हो रहा है, इट कुड बी ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस, ये भी हो सकता है कि अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है फिंगर्स की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर मस्कुलर या नर्व्स का पेन है। आई डोंट नो एनी ऑफ दैट, बट स्टिल फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आपका इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, आपका जो अपर जॉइंट के ऊपर ये पूरा एरिया जो है ना, ये सारा जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स योर फुल हैंड। ओके, तो आप यहाँ पे प्रेशर दो, अगर आपका आर्थराइटिस भी है, अगर आपका मस्कुलर या नर्वस पेन भी है, सब में एनर्जी फ्लो करेगा, तो दिस विल हेल्प यू, ठीक है, आप ये करो। नेक पेन के लिए क्या करें? ओके, नेक पेन के लिए सर्वाइकल आई एम गेसिंग, तो ये जो आपका जॉइंट है ना, ओके, नेक पेन कुड बी ऊपर, आई एम नॉट श्योर, अगर आप एक बार क्लियर कर दोगे, वरना मैं दोनों के लिए बता देती हूँ, पूरा बैक ऑफ थंब को कर दो, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है पेन क्योंकि नीचे भी हो सकता है, सो प्रेस द होल बैक ऑफ द थंब, ओके, दिस विल कवर योर होल नेक रीजन एज वेल एज सर्वाइकल रीजन, ठीक है, यहाँ पे कर दो। दूसरा, इफ यू आर अ वुमन आई एम गेसिंग एंड आपको नेक पेन हो रहा है, तो मतलब आप कुछ तो स्ट्रेस ले रहे हो, या आप बहुत किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो, आपको बर्डन लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह भी करो टू हेल्प यू रिलैक्स। एंड मैंने किडनीज का बताया, वो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, तो आप किडनीज को भी करो। After one takes food, we need to speed up digestion. Ideally, points should be pressed having food in the digestion area. No, Sony. So don't do that, because specifically for digestion I'm saying, क्योंकि डाइजेशन में बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है, आप उस फेस को करो ही मत, आप उस फेस को छेड़ो मत, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो इस होगा आपका, थोड़ा उसमें एनर्जी आएगी एरिया में, ठीक है, बट खाने के बाद नहीं करो कुछ भी।